Hello everyone, my name is Sahil Garg and today we'll be learning about different types of functions. Now let's see. Now we have discussed about some basic type like how you can write a function, how you provide the arguments and how you provide how you write a basic function also. Now let's see how we can use it, how we can define different types of functions. So अब तक हमने क्या पढ़ा था कि कैसे हम बेसिक फंक्शन लिखते हैं, फिर उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं और उसमें हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कैसे देते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शन. वन इज वॉइड फंक्शन, अनदर वन इज नॉन वॉइड फंक्शंस. हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है वॉइड फंक्शन, एक होता है नॉन वॉइड फंक्शन. इसको आप बोल सकते हैं रिटर्न फंक्शन और प्रिंट फंक्शंस. इसको हम ये भी बोल सकते हैं. पहले हम बात करते हैं वॉइड फंक्शन. ना वॉइड फंक्शन क्या है? जहां पे आप डेटा को स्टोर नहीं करवा सकते. वॉइड फंक्शन कौन से है जहां पे आप डेटा को स्टोर नहीं करवा सकते? एक आउटपुट जो एक फंक्शन आउटपुट दे रहा है उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, बोलते हैं वॉइड फंक्शन. जैसे कि हमारा एग्जांपल था ग्रीटिंग. नाउ ग्रीटिंग इज अ वॉइड फंक्शन. व्हाई इज इट? सो इफ आई से लेट्स क्रिएट अनदर फंक्शन. So def, and I suppose I want to function as sum. I want to some values. I want to add addition. Let's say to be addition. Now I'm creating a function addition which will add multiple values. So if I say x and y, it is taking two arguments x and y. So हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक फंक्शन बना रहे हैं एडिशन के नाम से. इसका काम है दो नंबर्स को सम कर, दो नंबर्स को जोड़ना. इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं x और y. हम इसको लगाते हैं. और if we use it like this, print x plus y. If I run it like this, if I create a function like this, so whenever I call this, I'll get a result directly. जब भी आप इस तरीके से अगर आप फंक्शन बना रहे हो जहां पे आपने प्रिंट स्टेटमेंट को यूज किया, जैसा कि आपने ग्रेडिंग में भी किया था, सिमिलरली एडिशन में हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया जो कि आपको एक रिजल्ट देगा. सो अगर आप इस तरीके से फंक्शन को बनाओगे, इसको रन करोगे, तो आपको रिजल्ट तो मिल गया. नाउ लेट मी शो यू अनदर टाइप ऑफ सेम फंक्शन. Let's say def addition underscore. Now here again it is seeing two arguments x and y. यहाँ पे भी हम दूसरा टाइप का फंक्शन बना रहे हैं जिसमें भी x and y are the two arguments. Now rather than using a print, now we are using a return. Rather than using a print function, now we are using a return function. X plus y. Let's run it. Now let's call this addition function. Again 5, 4. You see, both have given you same kind of result. दोनों ने बराबर ही रिजल्ट किया. तो डिफरेंस क्या हुआ? Now let's see the difference also. Now what I said, डिफरेंस क्या है प्रिंट फंक्शन में और रिटर्न फंक्शन में? कि आप प्रिंट फंक्शन में या वॉइड फंक्शन में आप रिजल्ट को सेव नहीं कर सकते. वहीं पे रिटर्न फंक्शन या नॉन वॉइड फंक्शन में आप रिजल्ट को सेव कर सकते हो. तो नाउ लेट्स सी इट. सो हम इसको एक वेरिएबल में सेव करते हैं इस रिजल्ट को. सो लेट्स से I. Okay, and if I print this I value, print, I'll not write it over here. Let's run this. So you're still getting this 9, but if I print I'll get nothing. None. But similarly, if you do it over here, let's say j is equal to this. If I run it, now you see, you didn't get any output right now. But if you run this print statement along with j, now you will get the output. Okay, so that is what it means, that you are able to save the value which is given by the return function, by the non-void function. So non-void function returns you the value as a value itself, which can be stored in a variable. So that is what we have. And you can project this one like, so if I have to write it, this will be looking like j is equal to 9, because this will be returned as 9. This will give you 9. So this will be like this. So now j automatically becomes an integer variable by using this function itself. So if you want to store the result of a function, that's when you go with the return statement. Now let's take one example of this here.
Now, if you talk about this greeting example, अगर हम greeting वाले example को दोबारा से समझे, तो greeting वाले example क्या था, आपको सिर्फ एक output दिखाना था, ठीक है ना, एक output दिखाना था, तो वहां पे हम एक print statement को use कर सकते हैं, वहां पे हम एक void function को use कर सकते हैं. But suppose अगर आपको एक data को clean करना है, if you want to clean your data, okay, now the cleaning process needs cleaning of null values, cleaning of outliers, cleaning of duplicate values. So there are multiple set of commands. Okay, now you just don't want to show the result, you want to save it so that you can use it again. ठीक है ना, अगर आपको डेटा को क्लीन करना है तो आपको सिर्फ डेटा को क्लीन करके दिखाना थोड़ी है, हमें उसको यूज भी करना है, उस क्लीन डेटा को यूज भी करना है, तो ऑब्वियसली हमें उसको स्टोर भी करना पड़ेगा कहीं पे. तो दैट इज वेयर यू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट्स और रिटर्न और नॉन वॉइड फंक्शन विच विल रिटर्न यू क्लीन डेटा, जो आपको एक क्लीन डेटा प्रोवाइड करेगा जिसको आप स्टोर कर सकते हो और देन यूज कर सकते हो. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉन वॉइड एंड अ वॉइड फंक्शंस. Okay, now let's talk about some arguments also. So we have different types of arguments as well. So here we have discussed the defined arguments, where you're defining particular number of arguments. Arguments में भी कुछ types आते हैं. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, argument जितने हमने argument define किए उतना ही वो function ले रहा है. Similarly, अगर आपको नहीं पता, suppose मुझे एक function बनाना है जो कि जितने भी वैल्यूज मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सबका सम दे दे मुझे. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट अ फंक्शन एज सम ब्रैकेट एंड आई कैन राइट अ स्टार arg. Now what is this arg? It refers to as argument. It also refers to as arguments. Yes. So I can say, now let's say this. Now argument refers to, जहाँ पे आपको argument refers to, like if you want to provide multiple values and you don't know how many values are going to come over there, जब आपको नहीं पता कि इस फंक्शन के अंदर कितने वैल्यूज आ सकते हैं, उस टाइम आप क्या करते हो, सब एक कीवर्ड डाल देते हो आर बाय द स्टार साइन. Okay, that is important to put a single star sign. Now how you can use for I in, because you can simply go with the argument, you can simply go for the loops. Args. So because it's a summation, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सम कर रहे हैं वैल्यूज का, मल्टीपल वैल्यूज है उनको हमें सम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सम ऑपरेशन लगा सकते हैं इस तरीके से. So for I equal to, let's define a variable inside this, value equal to 0, value equal to value plus. So now this way it will be keep on adding into the value. Let's print this result also. Now because obviously now we can imagine it needs to be a return kind of function, because if you're summing some values, obviously you can show it, but you might be need to store this result. So let's use a returns function, return val. Okay, now let's run this function. Now let's see. So if I run a function as sum, now in this one I can provide n number of arguments because it is taking arg we have provided, so you can provide n number of arguments in it. Okay, now if I run this, I'll get a sum value is 45. So that is the difference between a fixed number of arguments and this arg variable. Okay, similar to this, इसी तरीके से एक और मेथड आता है जिसको बोलते हैं k-args, जहाँ पे हम, so let's take an example कि आपको क्या करना है. सिमिलरली हमें एक और डिफाइन करना है जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं लोकेशन और नेम. ठीक है, लेट्स टेक द सेम सिमिलर एग्जांपल, लोकेशन और नेम जैसे हमने वहां पे लिया था. ठीक है, सो लेट्स से creating location. Now here what you can provide is you can use double stars. You can use double stars. Now what will this happen? Now you can provide multiple arguments in a form of key value pairs. You can provide multiple arguments in the form of key value pairs. So if I say greeting location,
print. I'm just printing the values, and obviously I have to run the loop also. So for in, so in x, I'll be using the print statement over here. Now what I can simply do is I can just print the result in the form of a key value pairs. So what I can do simply here is key, because you'll be getting two values, keywords dot items, because that is how you'll be getting it, and item is also inbuilt function of this, inbuilt method of this. Now what I'm gonna do is I'll be writing a print statement. Suppose if I provide here first the name, hello, and the I value, where they were at this as J. If I run it like this, with the indentation over here, it's a small error. Now let's run this function. And now let's call this function as greetings, spelling mistake of location. Now here what I can pass is, I can pass multiple arguments. Now if I call this, let's say Sahil, and along with that I'll provide an equal sign as day. Similarly, I pass Abhishek, again with the location as Noida. Let's go with 2 only. Okay. So here I'm doing is I'm writing it with respect to this noun names. Let's call this. Can I get some error? Okay. It should be equal. Because we're not equating it, we are defining that this equals to this. Fix here positional arguments. Have we run the correct one? Is the correct function or not? This part. Let's provide some value itself. If create 7, 29. Now let's give it a try. Oh, that was the thing, only error. So we are providing a value like a key value pair. Okay, for that particular key, that is the value available. So that is what we are providing in the case of keywords, that we are providing the values along with the argument, or the value key along with the argument. So that is what we are providing over here, the key value arguments. So that is how you can use the multiple arguments in the form of key value pairs. Okay. So that is what we have as the keywords part, where you're providing multiple values along with their value itself, multiple arguments along with their value itself. So that is what we have as the keywords part. And that is the different types of functions and different types of arguments which you can pass inside the function. In next video, we'll discuss about multiple or more advanced levels of functions. That's all for today. Thank you.